क्या ये with your future partner and then your children also will be the same? So she said yes. If there is a partner, I will frame him कि इतनी responsibility तुम्हारी है, इतनी मेरी है. Most of the people come or do things from the masks to look good. Can we make decisions for others emotionally? No, we cannot. As an astrologer, as an acharya, what I have always seen is it's not the numbers or the planets. It is we who make use of that particular thing. Anything given to me at a given point in time, it is my choice how I would use it. Hello all, welcome to our another season of the podcast. After the last podcast that we had shot with Richa ji, we have got multiple questions on karma debt. So this season, what we will try to do is how karma gets manifested through our emotional state and how do we activate our own sufferings and rather create our own sufferings. So this season we are trying to be a little different rather than question answer sessions which we have been doing in the past and having discussions. These episodes that we'll shoot in this season would have case studies, real life examples from people where we have had discussions. Primarily Richa ji has had their discussions, understood their stories, how they have behaved, how they have created their own sufferings, right, and probably unlock them, right. So we have Richa ji again with us. Thank you, Richa ji, for joining us, our energy alchemist, our guru. So Richa ji, if you can tell our audience how these episodes in this season would be different from the others that we have created in the past. So Gagan, thank you for again inviting me. But the most important thing आपका जो question है is like people always talk so much. आप अगर social media पे भी देखेंगे everybody is talking about past life. ये problem होती है, आप ये हो रहा है तो आपको ये तकलीफ होगी. गी and real time data is very different. To जैसे हम बोलते हैं ना, आप भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं. मानना is like it can be a possibility and जानना is like you know how it happens. So what we are doing in this season is that we are created like my sessions, which is called DNFID keys. So we work with humans on their karmic space where they are stuck, where they are blocked, and I've tried to give you all the data so that you can create a beautiful podcast out of that. So people can understand the real time suffering. मतलब मेरी life में हम हमेशा ये बोलते हैं destiny, planets, some person or my number, something is not working. As an astrologer, as an acharya, what I have always seen is it's not the numbers or the planets. It is we who make use of that particular thing. Anything given to me at a given point in time, it is my choice how I would use it. But we always blame on something other. Yeah. But हम एक साइड कहते हैं भगवत गीता में कह रहे हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो. But then which karma are we creating is the first question. तो जो ये हमारी इस बार की रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं जो आप बीच बीच में ग्लिम्पसेस होंगी, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हम अपनी सफरिंग को मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे आपके इमोशनल स्टेट्स, हम जो हार्ट है हमारा वो एक वॉरटॉक्स है, तो हमारा हार्ट बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, बट हमारा माइंड जो है वो एक स्टेट है. We don't have a mind, it's a state. It's a flowing state of something happening in your life and you're making some choices. Let's say you are in an emotional pressure. It means your mind will be pressurized to do something through your mind. Correct. तो mind is at the most suffering because आप आज देखिए mental stress, mental trauma क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे emotional states imbalance हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा mind stress feel करता है. I have to do it because I will not feel right. So it is not the mind who is controlling you, it is the heart which is controlling the mind. And I have not seen people talk about heart. Everybody is talking about mind. Mind को control करो, mind को ठीक करो, पर वो तो emotionally control हो रहा है ना. मान लो आपको अभी आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो गई, तो आपका माइंड कहेगा नहीं शुगर इज़ बैड, दिस इज़ बैड, बट यू विल स्टिल वांट अ बाइट ऑफ इट. तो जब तक आप वो बाइट नहीं खा लोगे, आपका माइंड उस प्रेशर को फील करेगा, आपके इमोशनल प्रेशर को. सो दैट इज हाउ ऑन विच लेवल द कर्मा इज क्रिएटेड. दिस इज द होल जर्नी अबाउट दैट. सो यू मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कर्मा क्रिएट कर रहे हैं हम. सो एक जो हमें पता है, लाइक आई नो इज जैसे कर्मा फ्रॉम द पास्ट लाइफ, और जो मेरे हिसाब से था कि जो मैं अभी कर्मा क्रिएट कर रहा हूँ, इफ़ आई एम डूइंग इट ऑल, इज़ फॉर माई नेक्स्ट लाइफ. बट वॉट आई एम गेटिंग इट इज़ जो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो वो इस लाइफ के लिए भी कर रहे हो.
फर्स्ट तो आप आज डे टू डे में जो आज आप क्रिएट कर रहे हो, कल एक फ्यूचर है ना, तो वो कल तो आपके सामने ही मैनिफेस्ट होके आएगा। तो जो आप आज करते हो विद इन 1.5 ईयर फ्रूटिफाई होता है। जो भी आप कर्मा सीडिंग कर रहे हो, तो आप उसको एक नेचुरल स्टेट ऑफ यूनिवर्स की तरह देखो कि आप एक बीज लगा रहे हो, वो कितने दिन में फ्रूट देने लायक हो जाता है, 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट कर्मा यू आर क्रिएटिंग, the fruit will manifest depending on the time span. So the universe or our life or the karma, they are synchronized in their working. The only thing is we are not able to see it. तो जो सबसे important point है, हम नहीं देख पाते. So अभी जो केस स्टडी के हम बात करेंगे आज, आप लोगों ने भी उनको सुना, आप सुनेंगे उनको. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है इस पे इज़, can we make decisions for others emotionally? No, we cannot. पहली बात तो मैंने जितना काम किया है या आज की डेट तक, टिल डेट आई एम टॉकिंग, आई हैव सीन यू कैन नॉट मेक योर माइंड अंडरस्टैंड. यू आर गोइंग थ्रू योर ओन इमोशंस. तो उस समय ये ज़रूरी ही नहीं है कि आपको सही इमोशन समझ आ भी रहा है अपने बारे में. तो जनरली जब आप दूसरों को किसी इमोशनल स्टेट तक ले जाने की कोशिश करते हो, पहले तो आप खुद उस स्टेट में ही नहीं हो. तो हम किसी और स्टेट में हो गए, किसी और को उस स्टेट में ले जाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं. लाइक लेट्स से आई वुड से, ओ डूइंग दिस इज़ वेरी गुड, सो यू वुड से या इट इज़ गुड, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट. तो मैं आपको क्या करूँगी, अलग अलग इमोशनल तरीके से उसको समझाऊंगी, मैनिपुलेट करूँगी, कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. तो भी क्या मैं आपको समझा पाऊंगी? टिल द टाइम योर माइंड इज नॉट, और योर इमोशंस आर नॉट एक्सेस्ड और synchronized with mind, your mind will not let you embody, your heart will actually not embody it, so your mind will not be able to do it. So what starts happening in that moment is you will start resisting my thoughts, or you will start resisting my company. जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग किसी का फ़ोन नहीं उठाते, कॉल नहीं लेते, they don't go and meet that person. What is actually happening is that person in some point of time tried to control them emotionally, or maybe tell them emotionally to do certain things which the person was not ready. तो माइंड ने बोला इस इंसान से ना बात मत कर, जब भी तू जाएगी ना तेरे को ऐसे फील करवाएगा. सो आप अवॉइड करते हो उन इमोशंस को गो थ्रू करना. तो अब यहाँ पे भी एक कर्मा है. लेट्स से योर लाइफ्स जर्नी इज टू लर्न दिस लेसन of how to handle people or how to deal with people. Now my question to many of the viewers is that क्या उस समय आप वो लेसन सीख रहे हो या आप और अवॉइडेंस क्रिएट कर रहे हो? आई थिंक माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, एंड देन दे प्रोबेबली एज द केस स्टडी दैट वी हैव, राइट? क्या नाम है आपका? सृष्टि स्वरूप. सृष्टि, व्हाट आर यू लाइक राइट नाउ गोइंग थ्रू इन लाइफ? दे बॉक्स एंड दे फील कि हाँ यही राइट है, because maybe I don't want to go through that pain again, I don't want that person to control me, maybe, or this is the right thing. Yeah, we don't want to have those discussions, we don't feel that trauma, we don't want to feel that pain. But see, when we say this in our head, we have to understand that now the person is not traumatizing you, now you are traumatizing yourself by controlling your own thoughts, your own behavior, your own mind state. भाई लेट्स से अगर मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, पर मैं सोच किसके बारे में रही हूँ? आपके बारे में तो सोच रही हूँ ना कि आई शुड नॉट पिक अप गगन्स फोन, आई शुड नॉट पिक अप बिकॉज ही इज गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई डोंट हैव एन आंसर. इट मीन्स द क्रक्स ऑफ द कर्मा हियर इज यू डू नॉट नो द आंसर. what you need to learn, what is your lesson here, to how to answer the person, not to avoid the person. बट आप कार्मिक डेट में क्या साइकिल क्रिएट कर रहे हो? अवॉइड कर रहे हो उस इंसान को. तो जितना आप अवॉइड करोगे उतना आपका कार्मिक गैप बढ़ जाएगा. मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट, let's say what your mind will start doing is it will start playing a new game in your head. And what will that game be? Like, I should not answer. Okay, next time if I have to pick up, then I might answer this smartly, or I might say this. या अगर मान लो मेरे पास कोई खड़ा है और वो बोले अरे आपका फ़ोन बज रहा है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? Let's say the universe is telling you why you're not picking a phone. Now some person comes, अरे नहीं मुझे ना अभी बहुत अर्जेंट काम है और ये इंसान ना 2 घंटे मेरे से बात करेगा, so I don't want to. Now here you're also saying that if the person is talking to me 2 hours, I do not have control of my time, the other person is controlling my time. So आप conversation, time, everything is being controlled by somebody in your life. Correct. Okay. So इसमें केस स्टडी में हमने ये भी देखा about the relationships she has in her family, right? Basically her mother, and she said, why should I give my emotions?
if the other person is not available, right? It may be physically, it may be mentally, कि साथ बैठे हैं आप कुछ बोल रहे हो और आपको बार बार लगता है कि दूसरा बंदा तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, और मे बी फिजिकल स्टेट में भी वो अवेलेबल नहीं थी उनकी मदर, while she said that it was our family's choice to let her go for some time to do whatever duty she had to do, but still she probably again boxed it. So what is happening here? Ki why is she not able to give those emotions now to her mother or family, while the decision that happened was hers also? So we already always hear this one very common statement ना, कि आपको हमेशा कहीं भी spiritual journey में जाएंगे तो आपको एक बहुत common statement दी जाती है, you should take your own responsibility. Yes. अब यहाँ पे इस बच्ची को, she was in 16 years old when she was asked this question, so she was willingly taking, she willingly took the responsibility. But क्या होता है जब हम willingly responsibility भी लेते हैं तो सबसे important part क्या होता है उस willing responsibility में? कुछ तो हमें चाहिए होता है. There is a certain way of expecting something from somebody. Like let's say we are having a conversation. You might have built up an expectation. Now in that case, she wanted to look good. She wanted to look the best child of the family. She wanted to show that I am capable Matured, of maybe. taking responsibility. And if you look at her face also, she's quite matured. Yes. She looks very contained. She looks very calm, poised. Why is she built up? 25-year-old girl? So bubbly, so much full of life. But she's so centered. There's nothing wrong in being centered. That's perfect. But that is not actually who she is. She's built that. It's like a mask in her life. So there are two real, जैसे हम spiritual में कहते हैं aligned, centered. That is what we need to do. But that should not be a mask state. Most of the people come or do things from the mask state to look good. कि मुझे कोई बुरा ना बोले. तो हम जितना भी socially काम करते हैं ना, we want to be accepted. So basically, the crux of these first three questions is कि people probably avoid to answer or to confront Self. those things, right? So they take a backstage and then create a karma, Create a story which leads to a karma. which leads to a karma. So मतलब इस choices वैसे बदलना शुरू हो जाएंगी ना. Let's say in that moment she couldn't say no. So what did she say? Yeah, I will do it. Now, is she happy with the relationship of her mother? No. Why? The question is, she said yes. Then why did she say yes? to look good, So, but did मैं she say matured that? हूँ, I'm Did she 16. say that to herself? No, she didn't. maybe to her inner self she said. No, she never said that. Okay. She never said that to herself, and that is where the whole story or her whole choices started changing, where she saw herself doing things what a 25 or a 30-year-old woman could do at 16. तो उसको लगा I'm intelligent, I'm capable. What a 30-year-old or a 40-year-old woman can do, I can do it at 16. So she started boxing her life in relationships, and किसी के साथ भी relationship है उसका, everything is very very prim and proper. It is like a perfect space. Correct. Okay, you can talk to me this much and I will not ask you these questions because it will disturb me. तो उसकी life picture perfect life है. But ये हम भूल जाते हैं कि पिक्चर परफेक्ट, आप पिक्चर अगर एक बार दीवार पे लगा देते हैं, कॉबवेब्स उसके पीछे भी हो जाते हैं. सो एवरीथिंग वंस मैनिफेस्टेड इनटू द यूनिवर्स, इट विल क्रिएट समथिंग. So maybe internally, has this led to her anger, anxiety and resentment internally, which is controlling her to build that relationship again with her mother? Or So she has to be, she is a perfect woman and a perfect girl. So anger she doesn't show, but she tries to create perfect escaping modes in her life. So in one of the questions when I was talking to her, I said, how late do you go to home? She said, quite late. So how much work do you have? She said, too much. I said, at the age of 25 where people have this challenge कि काम कहाँ से लाएं, काम कैसे create करें, उसकी manifestation power इतनी अच्छी है कि वो इतना manifest कर लेती है काम कि she doesn't have time. Even with all that work, she has time. So she said, yesterday also I went late. I went at 11. And she said, but I was sitting for 3 hours in the park. From 8 to 11, I was sitting in the park because I did not want to go home. Why? Why don't you want to go home? Because the moment you look at that person, you look at the face, you get emotionally triggered. But let's say you're sitting in the park. Are you not still getting emotionally triggered? You are actually mentally handling that trigger
कि मैं जाऊँ लेट तो इंसान पहले ही सो चुका होगा, मेरे से इंटरेक्शन ही नहीं होगी, मॉर्निंग आई विल गेट अप, आई विल डू माई कोयर्स एंड आई विल जस्ट मूव आउट. तो अब आप यहाँ देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ कर्मा इज शी बिल्डिंग विथ फॉर हर फ्यूचर. इफ शी इज अवॉइडिंग, शी इज अवॉइडिंग. So basically emotions हैं, and probably can we call this as that she's killing her emotions? She At least doesn't with- feel anything. She said in the session that जब ये perfect चल रहा है तो फिर feel क्यों करना? क्या ही हो जाएगा feel करके? क्या ही मतलब? And she gave a very small example, very funny it would sound. You've not even given yourself that attribute that you can have 2 ice creams or 3 ice creams or 1 ice cream या half ice cream. So you have not given yourself that choice only कि तुम्हारे पास ये right ही नहीं है बेटा कि तुम ये मांग सकती हो या ये कह सकती हो, तुमको खुद ही करना है तो करना. नहीं, इवन इफ आई गो एंड गेट इट, वो है ही नहीं चीज़. मतलब मुझे पता है कि एक आइसक्रीम खाने में भी वही फीलिंग आती है, 2 आइसक्रीम खाने में भी वही फीलिंग आती है. क्या फ़र्क है? मतलब शी हैज़ क्रिएटेड सच अ वॉल बिटवीन हर ओन हार्ट एंड हर ओन माइंड दैट शी डजंट लेट हरसेल्फ फील एनीथिंग. नहीं, बट जितना मैंने सुना, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि विद द फादर द रिलेशनशिप इज ओके, राइट. मदर के साथ मे बी दीज आर द प्रॉब्लम शी हैज़, एंड मे बी मेंटली शी हैज़ मेड अप अ बॉक्स कि ये इतने दायरे में ही काम होगा, उसके बाहर नहीं जाना है. एंड व्हेन यू आस्क्ड दैट क्या ये with your future partner and then your children also will be the same, so she said yes. But if this becomes a pattern, won't it become a pattern with your partner in the future or your children in the future? Because this is how you live, this is how your being is. If you can attract a partner, or maybe if you're in a relationship, then this is what will also frame, because this is how you live frame by frame. दैट इज़ हाउ आई स्टिल लिव. इफ देयर इज़ अ पार्टनर, आई विल फ्रेम हिम कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इतनी मेरी है, डू नॉट Then कम how आउट will ऑफ you इट. enjoy? How will you be able to do things which you want to explore in life with somebody? क्योंकि आप तो फ्रेम में लाइफ जी रहे हो ना. It's like you're a camera perfect picture life. Right, so maybe उसके लिए यही perfect है, and this has been working, and you know maybe that emotion has become so strong कि उसको लगता है यही लाइफ जीने का बेस्ट तरीका है. Yeah, and she also very beautifully quoted that अगर मेरा पार्टनर भी आएगा हाँ, तो वो उसको रोल डिफाइंड होगा. अगर वो रोल प्ले कर सकता है तो ठीक है. लेट्स से इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू डू दैट रोल, देन इट्स अ हायर एंड फायर थिंग, है ना. और दूसरी बड़ी बात है कि अगर वो कार्मिकली वो पार्टनर है ही नहीं उसकी लाइफ में, देन व्हाट? शी विल ऑलवेज ट्राई टू फिट दैट रिलेशनशिप इनटू द बॉक्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग दोज लेसन्स. So most of the time, to stop our emotions of what we are right now thinking that handling things are good, not thinking what is actually in our karmic space. so how does she get out of this mold so that she doesn't create those karmic debts what you're talking about? What should she do? First of all तो देखो, आप सबसे important चीज़ है कि उसका एक बड़ा powerful statement था, not required from my mother, she is my father's wife. Things she will give you as a mother and physical things you will also give to her as a daughter. But when it comes to the real connection or the real relationship, it's not there. ओह, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. मतलब मैंने हमेशा वैसे ही देखा है कि शी इज़ माई मदर एंड शी इज़ माई फादर्स वाइफ, लेकिन नेवर एज अ पर्सन टू हुम आई कैन टॉक टू एंड गो टू. मुझे समझ नहीं आता. इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप दैट आई हैव टू मेंटेन, बट ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है. तो पहले तो उसने अपने मदर को एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ एज अ मदर, बट उसने अपनी मदर को वो स्पेस क्यों नहीं दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शी ऑल्सो सेड वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि पहले जब तक माई मदर वॉज नॉट देयर, आई लर्न कुकिंग. Correct. आई एम वेरी गुड एट कुकिंग. Now I don't cook. But now I don't cook because now it is her job. I just know कि I learned cooking just because she was not there. Now she's there. I will not touch anything in the kitchen because that is not my job. So when you say it is not my job, what do you mean by that? Because she is supposed to cook and I'm not. So how does she see life? First she see life as a job. She doesn't see life as a life. तो सबसे पहले तो यही रेजिस्टेंस उसको ख़त्म करनी पड़ेगी. लाइफ इज़ नॉट अ जॉब, लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस. और मैंने उसके साथ एक और पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट शेयर किया. मैंने कहा हैव यू येट एक्सपीरियंस द बेस्ट वर्क ऑफ योर लाइफ? शी सेड नो.
शी सेड नो, इवन उसके प्रोफेशन में वो दिखता है कि वो अपने क्लाइंट से भी उतनी ही बात करती है जितना जरूरी है, या Like उसको जरूरी लगता है. हाँ, Maybe, मतलब वो not क्लाइंट जरूरी से है. भी उतनी बात नहीं करने देगी जहाँ पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड. Hmm. So she's even maintained those boxes with the client. It's not just, and she creates one box, she closes the box, then she creates a new box. For that moment when she's creating a new box, she learns about her mental space. Oh wow, she's still the perfect person, and nobody can see those boxes. Hmm. तो जब एक पॉइंट पे वो बार बार वर्ड बॉक्स आ रहा था, she said, oh now it's sounding so weird, it's a box. Because अभी तक उसने ये देखा भी नहीं था. तो फर्स्ट थिंग इज जो आप उससे नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइफ इज़ नॉट दिस थिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस. एंड सेकेंड थिंग है कि आप पहले जो कर रहे हो, क्या आप वो ऑब्जर्वर मोड में देख भी पा रहे हो? Hmm. लाइफ इज परफेक्ट और बॉक्स्ड, Hmm. व्हाट इट इज. So, did this in your conversations, because you're an expert, you know, did this habit happen or cultivate of creating those boxes after her mother left, or this has been the pattern that she's been creating since she probably matured a little bit, 10-12 साल की हुई तब से हैबिट बना, या ये उसकी मदर के जाने का ट्रिगर था, and that's why the problem is still the mother largely, because she didn't talk about any other relationship where she has this problem, and then future में भी वो relationship ऐसी बनाएगी box करके, maybe, right? So is this that 16 years when she took that decision knowingly unknowingly to look good or whatever the reasons were, so वो ये trigger वहाँ से हुआ ये box बनाने का, ये या पहले से ही था कुछ ना कुछ? She learned this in the journey when her mother went, so it's like she so got after an that. adult role. Hmm. शी हैड टू बी द परफेक्ट एडल्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम परफेक्ट एडल्ट की बात कर रहे हैं, तो 16 साल का बच्चा एडल्ट नहीं है. Correct. शी इज इन द मिडेस्ट ऑफ बीइंग एन एडल्ट एंड लीविंग दैट जर्नी. सो नाउ हियर द क्वेश्चन वाज, शी हैड एन एल्डर सिस्टर एंड शी हैज़ अ यंगर सिस्टर. सो व्हाट वाज हर रोल? शी हैड टू लुक परफेक्ट. शी कुडंट मेक अ मिस्टेक. सो हाउ डूड शी सी वॉट एवर शी डिड, शी सॉ कि अच्छा ये करने से ये परफेक्ट फिट आ जाता है. एंड क्योंकि वो उतनी मेच्योर्ड भी नहीं होना चाहती, तो शी वुड ऑल्सो ट्राई टू गो आउट एट टाइम्स. बीच बीच में वो बाहर चली जाती थी ताकि शी कुड हैव दैट फन, बट शी नेवर हैड फन. इट वॉज जस्ट, वाई डिडंट शी लेट हरसेल्फ हैव दैट फन और जॉय? नॉट बिकॉज शी कुडंट हैव इट, बट शी डिड नॉट वांट टू इवन मिस आउट दैट परफेक्ट पार्ट जो उसने दिमाग में बिठा लिया था ना कि मेरी लाइफ का ये परफेक्ट हिस्सा है, मैं ये प्लस ये करूँगी तो हमेशा सीक्वेंस सही बैठेगी. तो उस सीक्वेंस को ना टूटे, इसलिए उसने अपने इमोशनल स्पेस में हैप्पीनेस को भी बंद कर दिया. शी वुड गो आउट विद फ्रेंड्स. सो शी हैज़ इवन फ्रेंड्स फॉर एवरीथिंग. मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम है, मतलब किसी के साथ दुख बांटना है तो ये फ्रेंड है, किसी के साथ शॉपिंग करनी है तो ये फ्रेंड है. सो शी हैज़ बॉक्स्ड इवन द फ्रेंड्स कि किसको किस समय पे मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है. दोस्त नामक चीज़ है मेरे पास, दैट जस्ट नामक दोस्त. Anyway, बट वो तुम्हारे उस प्लान को फिट कर देते हैं ना, वो भी परफेक्ट प्लान को फिट कर देते हैं कि भाई चलो 2-4 घंटे टाइम पास हो जाता है. हाँ, मतलब इस चीज़ के लिए है तो ये कॉल कर लो, इस चीज़ के लिए वो उसे कॉल कर लो. So now here this is a very important and critical point. She is trying to live that perfect Life. show that human. And where is she blaming? That my mother was not available. But the reality is, because her mother was not there, she could learn to be that perfect human. So she's been blaming her mother, but she's never able to see that she was the person who manifested it, who wanted this. And even today, from 16 she's now 25. Past 9 years, she's never wanted to change anything. Correct. Instead, she's increasing those boxes. Sir, boxes अच्छे हैं ना, क्या problem है boxes में? But now she started seeing a gap underneath. She started seeing that everything she's doing everybody looks at her and says, oh, she's a perfect girl, she has a perfect life, she has the perfect money, she has a perfect job. Even the client says she's a perfect architect. But she started creating a gap. Because एक चीज़ को आप करते करते एक पॉइंट आएगा सैचुरेशन का, उसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं अतृप्ति. जब आप ओवर सैचुरेट हो जाते हो तो फिर उसके बाद उसमें आप पानी में चीनी डाल दीजिए, तो उसके बाद चीनी एक पॉइंट के बाद मिक्स नहीं होगी एंड आप भी उसको पी नहीं पाएंगे. तो इन हर लाइफ नाउ शी इज इन दैट वॉइड स्पेस.
Now she doesn't understand when everything in her life is picture perfect. When she's created the perfect boxes, perfect relationship, perfect happiness, perfect job, perfect everything, then why? So I asked her this question. I said, have you ever thought of leaving the house and going? She said many times, but I don't know why I'm not able to. मैंने उसको फिर एक बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया. मैंने कहा बिकॉज यू वॉन्ट योर मदर टू कम एंड फॉल ऑन हर फीट एंड से सॉरी आई वॉज नॉट देयर फॉर यू. सो दैट्स हर एंगर फॉर हर मदर बिकॉज शी कांट से दिस कि आप नहीं थे, बट बिकॉज शी वॉज द पर्सन हु गिव परमिशन, शी वॉन्टेड टू बी दैट परफेक्ट पर्सन. Then I also asked her one more very beautiful question. I said, if you don't want to leave, then why is it? Why is it? So she said कि नहीं, मेरे को ऐसा लगता है socially लोग क्या बोलेंगे. मतलब I'm not leaving house because of her. Of course. रह के देख लो 4 दिन तो वापस आ जाओगे. हाँ. Must have tried it. लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा सोसाइटी हो गई है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि घर कैसे छोड़ दिया. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी की वजह से नहीं जा रही होंगी. मैंने कहा बट यू आर डूइंग एवरीथिंग, मेनी थिंग्स विच सोशली माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल, but at that point she wants her mother to say sorry and acknowledge her. And why she's standing with her mother right now? Not because and providing everything for what her mother was not there for those 4 years, because she wants her mother to feel that आप मेरे लिए नहीं थे. See, I'm there for you. I will always keep coming for you, but one day you will say this from your own mouth. Now let's say how is the silent karma working in her life? But the mother doesn't even know. No, she feels no. कि तुमने हाँ बोला था तो it's fine. हाँ, तो but वही point उसको नहीं समझ आ रहा ना. See, this is what I'm showing, that how the human is building a whole emotional trauma for the self. See, she's not going home. The mother thinks she's working. माँ तो यही सोच रही है कि मेरे बच्चे के पास काम इतना है बिकॉज वो सक्सेसफुल है, तो माँ तो यही मान के चल रही है कि शी सक्सेसफुल. शी डजंट नो दैट शी सिट्स इन द पार्क फॉर 3 hours or 4 hours to avoid going home. Because for the mother the reality is that she's busy. Correct. So that is the reality कि you had approved of this. You were also part of the approval process where you also said हाँ आप जा सकते हो at that age. And now whatever expectations she has, they are again inbuilt in her mind, in her heart, wherever. और वो बोल नहीं रही है, plus you know She wants her to understand. to understand. But also there is one part, if her mother says, then everything will again shatter. So she doesn't even let her mother feel that completely. Why? Because उसकी फिर perfect picture disturb हो जाएगी ना. तो दोनों, she wants both. And she doesn't know how to figure out this part. That's the void. She doesn't know that ये problem है कि मेरी माँ मुझे sorry बोले, ये मेरी inner unconscious state की desire है. लेकिन साथ में जो मैंने perfect life और perfect human अपने आप को दिखाने की एक वो क्या कहते हैं एक प्रोग्राम बिल्ड कर लिया है या एक सिस्टम बिल्ड कर लिया है, तो अब मुझे परफेक्ट ही दिखना है. बट हियर इन बोथ शी इज गेटिंग एग्जॉस्टेड बिकॉज इफ हर मदर कम्स एंड सेज सॉरी, then she has to touch that emotion or she will touch that emotion, because in many statements she said बात ही क्यों करनी है, बात ही क्यों करनी है, everything is perfect ना, बात सब कुछ सही चल रहा है, क्या करना है. Now here the question is, बात अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हो? Because the moment she says something and she will cry, the emotions will touch in her body, and the moment that emotion touches, her perfect boxes will just float in that. Now she has to accept her mother, so she doesn't want to accept because she wants this perfect life, because she loves this, and also she wants to see her mother suffering and come say sorry. So like, let's see this whole human life at the age of 25. What is the karma you think will last in the future, or what will land in her future अगर ये पिछले 9 साल से कर रही है? Now slowly the void has come, and after the void what is going to happen? It's going to create a pain. Maybe in her relationship she gets a mother-in-law like that, maybe she gets a daughter like that who does the same thing. Now then where do you run? Then So it is better to break that pattern now. Speak to her mother probably, and it's speak to herself. I think that would be a more better thing, that acknowledging that what I'm doing, why am I doing. अगर हम perfect life चाहते हैं तो उसके और बहुत तरीके हैं. उसमें आप अपने आप को emotionally traumatize करके, that has never been the right way. And basically I think she has to understand there is nothing called a perfect life. Yeah.
life is never a straight line. There are things, ups, downs, right? Relationship, because two people are not the same, right? So, abhi, and I think this struggle is with many a people. Two things that I liked you said is कि आजकल लोग बोलते हैं mental health, mental health, mental health. It's probably not the mental health. It's probably the heart. So it's the emotion. I've hardly seen people. जब आप एंग्शियस होते हो तो आपका हार्ट पल्पिटेशन बढ़ती है, माइंड के ब्लड प्रेशर हार्ट की पल्पिटेशन से बढ़ती है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हार्ट एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द हार्ट. इट्स अ वॉर्टेक्स. द हार्ट आप अगर देखें एनर्जी ऐसे आती है, हार्ट में आके फिर एक्सपैंड होके नीचे जाती है. द हार्ट कंज्यूमेट्स एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू. आप देखो कोई आपको कुछ बोलता है या आप किसी की बात सुनते हो तो आपके आंख में आंसू क्यों आ जाते हैं उसकी बात सुन के? क्योंकि आपके हार्ट में पेन है, दिमाग में पेन नहीं होता है. वो तो सिग्नल जाता है वहाँ पे, तो it reacts that way. Okay. So basically, I think the message or the crux of this is that people have to manage their emotions. Yes. Or what needs to be done, because ऐसे आपने बोला रो पड़ते हैं, कई लोगों को ट्रिगर होता है तो गुस्सा आ जाता है, right? So anger is also an emotion. Of course. And then the flip side is they say don't control your anger, because if you control your anger, But even it if may you go are, and impact if something you else. you've not see, आपने जब हम एंगर की बात करते हैं, very very beautiful question. The moment you get angry, it has a suppression which just jumps up. So आपने भले ही आज आप एंग्री इंसान देख रहे हो, पर आपने ये नहीं देखा कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रिएक्शन आया या रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे there was something which was holding on in the emotional space. This emotion of anger also did not just jump all of a sudden. It was a space in you or a time, maybe a week, 10 days, 2 days, 2 hours. I'm not saying that everybody has a different time, but there is a time between that first reaction and the second reaction. In the A to point B, you have created something emotionally which you have not seen. So basically, This is called an unconscious state of emotion. So basically, आपको कोई problem, suppose there are two people, A did not like what B said. Now either he or she tells, communicates and talks, कहे कि ये तुमने बोला है अच्छा नहीं लगा, but maybe he or she suppresses it, saying that कि पता नहीं उसको कैसा लगेगा. He may also react. Or she Maybe also sometimes it's not just suppressing. Maybe you don't have the right words to express. So आपके पास अगर सही words हैं, जैसे आपने पहले ये बात बोला नहीं उसको बुरा लगेगा, पर क्या आपने अपने सही शब्दों का चयन किया क्या? अगर हमने सही शब्दों का चयन ही नहीं किया तो उसको बुरा लगेगा ना. The words are the communicating mediums. So if I'm not talking, either I'm talking in positive words or I'm talking in negative words. This is how humans talk. So अगर आप positive बात कर रहे हैं तो positive के पीछे negative polarity भी है. See, the mind will process this. Correct. और मैं जितना काम करती हूँ, I have seen one very important thing. मतलब आने वाले समय में मेरा बहुत सारा ऐसा काम आने वाला है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है. They've never thought about it. But your mind is a CPU which is reading a language. Okay. Now the mind, whatever it is interpreting, it's a coding. Like आप कंप्यूटर में डालते हैं. अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास्ट एक्सपीरियंस से मैच नहीं होगी तो वहीं पे वो बोलेगा एरर 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 एरर. माइंड starts creating errors. Now when the mind is started creating error, your mind cannot think about any right words to speak to the other person. So now either you pick up anger or you just create an escapism. These are the only two ways we know. बट मैं हमेशा हर एक अपने वर्कशॉप्स में भी बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, पॉडकास्ट पे भी बोलती हूँ, लर्न द लैंग्वेज ऑफ पावर. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर ऐसा पॉजिटिव ही बहुत अच्छा होता तो यूनिवर्स नेगेटिव क्रिएट होता ही नहीं. यूनिवर्स में दोनों पोलैरिटीज़ इक्वल चलती है. इफ़ शिवा इज़ प्लस देन शक्ति इज़ माइनस. सो शक्ति इज़ द रीज़न where Shiva gets activated. If you look at Shiva, Shiva is the center part and Shakti is the outer part. है ना शिवलिंग का. तो जब तक शक्ति एक्टिवेट नहीं होगी, शिव is just still. They say it's a saying that without Shakti, Shiv is Shav. So even in your life, they are together. The polarities will work together. आपका mental और emotional space बिल्कुल सही काम करेगा, एक साथ काम करेगा. The gap is when you do not understand the things. That is, अब जैसे आप इसके केस में भी देखिए तो there is a void. There is one part in her which wants that her mother should come and say sorry, but there is a part in her which is resisting, because if her mother will say sorry, then she will have to face her own emotion
कि मुझे खुद को गिल्टी फील करवाना पड़ेगा कि मैं इंटेलिजेंट, मैं स्मार्ट बन रही थी, मुझे वो स्मार्टनेस दिखानी थी अपनी फैमिली को कि हाउ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट आई एम, बट my mother became the reason of blame and it got that juice, emotional juice to keep pumping it. Correct. To keep pumping my success. तो कई लोग बोलते हैं ना गुस्से में लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं गुस्से से. हाँ, this is a very powerful emotion, but after a point there comes a void, there comes a disconnect between themselves because all their life, like let's say in this case, she took 9 years to create that burnout for her life. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो हमारा माइंड रीड कर रहा है वो हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू रीड कर रहा है. हमने जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस किया, इट कैन बी एन एक्सपीरियंस थ्रू माई पर्सनल लाइफ, इट कैन बी एन एक्सपीरियंस थ्रू आई लिसन टू अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर, मे बी आई लिसन टू सम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैंने बोला अरे उस दिन मैंने देखा था ना इसमें शुगर ज़्यादा होती है तो मेरे को ये नुकसान करेगी. वो शुगर आपको इसलिए नुकसान नहीं करेगी उसमें शुगर है, इसलिए नुकसान करेगी कि आपके माइंड ने वही डाटा रीड किया. करेक्ट. And your body on the somatic level is sending through your neurotransmitters message to your mind, ये पीते ही तेरी बॉडी में you will put on weight. तो आपकी जो बॉडी का सर्किट है, you are actually a machine who communicates through your neurotransmitters, through your chakras, through your mental coding. So there are certain things. आप देखिए ना किसी से बात करते हैं, साउंड कितना मैटर करता है. सिम्फैटिक्स जो है, हम जब टोन्स की बात करते हैं, मेरे और आपके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो कितनी स्मूथ होगी या आप कितने एजिटेट होंगे विल बी डिपेंडिंग ऑन द साइमैटिक्स शिफ्ट इन द टोन ऑफ माई वॉइस. तो जितना मेरी वॉइस में सटलनेस होगी उतना आपकी बॉडी में कोई एजिटेशन नहीं होगी. बट द मोमेंट माई वॉइस स्टार्ट्स बिकमिंग, changing the tones, becoming a little sharp, your body will start getting agitated because we are two vibrating beings exchanging not just vocal messages, sound messages also. So for people who are watching this, and again, you know, some people, many people will relate, not exactly in relationships but otherwise, that how do they behave or how they have, you know, controlled certain emotions और उसकी वजह से वो पैटर्न बन गया है. So 2-3 key messages, how should they, you know, unlock this and not create that karmic debt and become better? So उससे पहले मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने अभी सृष्टि के केस में बोला कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके प्रोफेशन में भी, उसके रिलेशनशिप में भी, उसके फ्रेंड्स के साथ भी, एवरीबडी शी इज़ क्रिएटेड द सेम बॉक्स और द सेम पैटर्न. तो कभी भी सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो आपको ये इफेक्ट देखना है. आई ऑलवेज टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिजल्ट को कभी मत छोड़िए. रिजल्ट इज़ द आंसर विच इज़ टेलिंग यू वेयर आर यू इन लाइफ और व्हाट यू शुड अनलॉक और व्हाट यू शुड इवन चेंज, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप को यू विल गो क्रेजी. बट आई ऑलवेज से यू आर ए परफेक्ट पैटर्न, यू आर ए न्यूक्लियर पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स. देयर इज़ नो पैटर्न लाइक यू. आपका माइंड किसी भी परिस्थिति में इमोशनली, मेंटली किस तरह से सिंक्रोनाइज होकर उस चीज़ को रिसेप्ट करेगा, द सेकेंड पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू इट. एग्जैक्टली सेम रेप्लिका नहीं बनेगा. तो सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछिए दैट इज इट सिंक्रोनाइजिंग एवरीवेयर इन योर लाइफ, इज दोज रिजल्ट शोइंग एवरीवेयर इन योर लाइफ. सम पीपल ट्राई टू हाइड दैट और अच्छे रिलेशनशिप में बन के दिखाते हैं लाइक दैट परफेक्ट ह्यूमन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको किसी से कोई बात बुरी ही ना लगे. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन. बट आप अगर अपने आप को बोलो नहीं मेरी मैरिज तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं तो बिल्कुल रिलेशनशिप परफेक्ट है, देयर इज समथिंग विच यू आर हाइडिंग थ्रू योर सेल्फ. फर्स्ट की पॉइंट, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ विद योर सेल्फ. बिकॉज हम वाक की बात करते हैं, थ्रोट चक्रा की बात करते हैं, जब तक आप अपने वाक को शुद्ध नहीं करेंगे, खुद से सत्य बोलना नहीं सीखेंगे, टिल दैट टाइम यू आर ऑलवेज क्रिएटिंग more jinx in your life, meaning you're unconsciously attracting more negative karma in your life. क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको यही नहीं पता आप manifest क्या कर रहे हैं. You cannot. People say I have to control. You don't have to control. You have to just observe where you are lying to yourself. You have to be truthful to yourself. Second thing is, जब भी आप लाइफ में कोई भी चीज़ पिकअप करते हैं तो आप एज अ ह्यूमन जब पिक करते हैं, there are two sides of life. One is a human way we see life and the second is how we soulfully understand that life. कोई भी सिचुएशन में आप अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन कीजिए, इज दिस इन द फ्यूचर, मे बी बिकॉज टुडे यू
might feel this is right or wrong as a particular age or a particular woman, but let's say कि आप 5 साल बाद तो सेम नहीं रहेंगे, क्या उस समय इसका कार्मिक जो फ्लावर आएगा या जो आपको फ्रूट मिलेगा, क्या 5 साल के बाद जब आप बदल गए होंगे इसी चीज़ को आप ले पाएंगे? आज आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कल तो आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो, तब आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी ना लगे। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करेंगे, और तीसरी जो मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलती हूँ, ऑलवेज लोग जर्नलिंग बहुत करते हैं, बट जर्नलिंग करने का मतलब एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ जर्नलिंग? ऑलवेज टू फिल द गैप बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड, मेक नोट ऑफ एनी सिचुएशन, इन वन पार्ट राइट अबाउट योर माइंड, राइट अबाउट योर हार्ट, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपके माइंड ने आपको क्या मैसेज दिया, वेयर वर द एरर्स योर माइंड क्रिएटेड, एंड इमोशनली व्हाई डिड दोज एरर्स कम, was that a past experience, was this this thing? Because many people ask me past life karma, past life karma. अरे आप आज जो कर रहे हो आज, कल ये भी past life karma ही होगा. This what you've not addressed. Like let's say in Shrishti's case, if she's not addressed this at the age of 16, that karma has come in front of her after 9 years ना, तो ये भी तो past karma ही हुआ. This is called current life regression. हम जब इसी karmic space को loop बना लेते हैं, and we as humans do not see things as loop, we only think कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, I know it all. I know it all, correct. But believe me, as a human, you do not know about yourself. Because when you are in that emotional debris, तो आप उस emotion को, because emotions are very painful. आप देखिए शिव भी तो रोए तभी तो रुद्राक्ष बने, जहाँ जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष हुए. तो how in the human body it is so painful that we, to avoid those emotions, we can do anything. Okay. Thank you so much, Richa ji. With that, I think this was again a very informative and knowledgeable session. I assimilated a lot of information. Of course, I would have to go through them again and understand it better. So, request for all of you, if you like this episode and if you have any questions, please write your comments or leave the question, and we will certainly, the team of Richa will respond to you guys. With that, thank you and Jai Mata Di.